भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोकर्णोवाच। श्रीमद्भागवत महात्म्य अध्याय 5। श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां। किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसन्। श्रुतोवाच एवं पुष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चे। पुनः पुनः शक्तो वचनोच्चार्य संज्ञामात्रं चकार हे ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदीरयत्। तत्सेकहतपापोऽसौ वक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति मानामता। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिना। लोकानां हिंसके सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितातः। प्रेम त्वं मापन्नो दुतसां च वहाम्यहं। वाताहारेण जीवामि देवाधीन फलोदयातहो। बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्माशुतमोचया। गोकर्णवचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं थाब्रवीत्। गोकर्णोवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः। तत् कथं नैव मुक्तोऽसि मयाश्चर्यमिदं महत्। गया श्रद्धान्मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्ति वः। किं विधेयं मया प्रेतं तत्त्वं वदस्वैस्तरम्। प्रेतोवाच गया श्राद्धसतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायं परं कञ्चित् त्वं विचार्य साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गता। शतस्राद्धेन मुक्तिश्चेत् संसाध्यं मोचनं तविदानीं तु निजं स्थानं तिष्ठ प्रेत निर्भया। त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकाय निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गता। गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तद्ध्येगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीतया समागता। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव तपश्यन् पश्यन्त शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमित्यभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच। सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् यत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्वदीयं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तिता। तत्श्रवणार्थाय देशग्रामाः ययुः। वृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापछायाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदेव आसनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां। सप्रेतोऽपि तदा यातस्थानं पश्यन्नेतस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितं। छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो हि यशो। वातरूपी स्थितिं कर्तुं शक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव। वंशैकग्रन्थिभेदो भूतशब्दं पश्यतां शतां। तुतीये हनि तथा साध्यं
द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय हनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम, एवं सप्तति निश्चयेव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा सा द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेततां जहु, दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदां मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकोटि कुंडलान्विता, ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेत कश्मलात्, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति, आदं शुष्कं लघुस्थूलम् मनः कर्म विकृतं श्रवणं विदहेत पापं पावक समिधो यथा, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि, एकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं, किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियशा, ध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना, अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं, चर्मावन्धं दुर्गन्धं पात्रम् उत्पूयिष्यो, जराशोक विपाकार्तं रोगमन्दिरं आतुरं, दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं, किर्मीविडभस्म संज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्, अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुरुतोऽयं, साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति, तदीय रस संपुष्टे कार्ये को नाम नित्यता, सप्ताह श्रवणाल लोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्य अर्थम एतदेव हि साधनम्। बुबु बुधबुधाइव तो ये सुमस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जिता, जं जलस्य शुष्कवंशस्य यत् ग्रन्थि विभेदनं, चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थि भेद कथा श्रवात् भिद्यते, हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते कृते, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी, कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धो स्मृता, एवं ब्रुवती वै तस्मिन् विमानमागमत् तदा, वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं पशुफुरद दीप्तिमण्डलं, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुता विमाने वैष्णवान्, वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत्, गोकर्णोवाचात्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, कानि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, श्रवणं संभागेन सर्वेषाम् इह दृश्यते, फलभेद कुतो जातः ब्रुवन्तु हरिप्रिया हरिदासा ऊचु, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वेण न तथा मननं कृतं, फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मनमानद, सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं, मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम्, अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा, वैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पातकं, हतं श्रोत्रिये दानं नाचारं, हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मेन्दीनत्वभावना, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मति, एवम् आदिकृतं चेतस्यात् तदा वै श्रवणे फलम्, पुनः
श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्ण तब गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवं मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना श्रावणे वासी गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानेशः भक्तेश्च हरि आविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा पंचजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत् स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत् स्वसदृशं हरि सो श्रोत्रनन्यान् घनश्यामान् पीतकोशेयवासस किरीटिनं कुण्डलीन् तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डाल जातया विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत् गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभाम् कथा सेवता प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गति कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमोत्तर ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पीतश्च ते गर्भतात न भूयः वाताम्बुपूर्णाशन देहशोषणे तपोभिरुग्रैश्च काल संचितै योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुत आख्यानं एतत् परमं पवित्रं श्रुतं शैकृद्वै विदहेद्घोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे न नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनं नाम पंचमो अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। अथ षष्ठो अध्यायः श्रीमद्भागवते महात्म्य अध्याय 6 श्रीमद्भागवत महापुराण मूल पाठ गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधेश्याम। कुमारा ऊचुअथ ते शं प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहाये वसुभिश्चैव प्रायः साधयो विधि स्मृता देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोजो च मार्गशीर्षः सुशीर्णभा एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचका मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेत्तरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेषया प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र
आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचिद् दूरे चाच्युत 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 कीर्तनास्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं चैतल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभा अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा भवन्तश्चेतथा शीघ्रमायात प्रेम तत्परा नावकाशः कदाचिच्चेद् किच्चेद् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथागमनं कार्यं क्षणो तत्रैव सुदुर्लभा एवमाकारणम् एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां व्यासस्थानानि कल्पये तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत् कर्तव्यम् तत्कथास्थलं चोदनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपरिष्कारम् उद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् वा अवल्काप्यचाहतो यत्नादिस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपा प्रोच्चैः कदलीखण्डं मण्डिता फलपुष्पदले विश्वग्निवितानेन विराजिता चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्परि संपद्विराजिता उर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः स्वेस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोधय च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेदुन्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राणमुखस्तथा प्राणमुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोदन्मुखस्तथा तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकं मध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्तादेशकालादिको विदे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशोऽधिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निष्पृहा अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता वक्तु पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविध पंडिता संशयच्छेता छेतता लोकबोधन तत्परा वक्त्रा क्षौरं कर्तव्यं दिनाद वाग व्युताप्तये अरुणोदये सो निर्वर्तय शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वयं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं पूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्धयर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च कर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह
गृहीतांग मामुद्धर भवात् भवाण्वात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीतया धूप दीप समन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्यो आख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल स्व सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहम्। तब केशवैवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् शम्भुष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयसेव हि वर्णं पञ्च विप्राणां कथा भंग निवृत्ते कर्तव्यं तेर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यंस्तथा कीर्तनकारिणा नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयम् आसनम् आविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च कथाचित् शुद्धमति लभेत फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रि प्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठां सुधीमता। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्। तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा मलमूत्रज्यार्थं हि लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्च शृणुयात् तदा घृतपानं पेयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वै वा भाव्यमेकभुक्तेन स वा पुनः सुखसाध्यं भवेद् यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् नोपवासो वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। सप्ताहवतीनां पुंसां नियमान् शृणुनारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमध सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथावती। द्विदलं मधुतैलं च घरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषिष्टम् जह्यान् नित्यं कथावती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभम् एव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथावती। वेद वैष्णव विप्राणां गुरुग्रो गोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथावती। राजस्वलान्तय जम्लेच्छ पतित
व्रात्यक एस्तथा द्विज द्वीड वेद बाह्यश्च न वेद्य कथावृति सत्यम शौचम दया तयामो मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवं कुर्यात् कथावृति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच्च कथाम इमाम पुष्पा काक वंध्या च वंध्या या च मृतार्भका स्ववद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा एवं कृत्वा विधिमुद्यापनथाचरेत जन्माष्टम इव तमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापन्नाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यथा एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभिः भक्तितः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्याश्चाथ दीयताम् मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कार्येत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमननं च दीयताम् विरक्तश्चेद भवेत् श्रोता गीतावाच्या परिहनि गृहस्थश्चेतता होम कर्तव्य कर्म शांतये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पिश्च तिलाननादिक संयुतम अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहिता तन्मयात्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वता होमासक्तो बौद्धो होम्यं दद्यात् तत्फल सिद्धये नानाच्छिद्र निरोधार्थं न्यूनताधिक तानयो दोषयो प्रश्मार्थं च पठेन नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यमादधिकं यत द्वादश ब्राह्मणान् पश्चाद् भोजयेन मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तो फलत्रयमितं स्वर्णं सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्ये पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशया कुमारा ऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं
नियतात्मानां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुपुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां तथा पुष्टता परातारुण्यं परमं चाभूत सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धेषु ये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभृता एवं कथनं समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा तानुवाचा कृतांजलि नारदोवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्ध सर्व पापे हरो हरिश्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवती वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात सुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा वासात्मजो ज्ञानमहाधि चन्द्रमाः कथावसाने निर्जलाभपूर्णः प्रेम्ण पठन भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा स दस्या पारमोतेजसं सद्य समुत्थाय दोदर्महासनं प्रीतया सुशीतम। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।